Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं हूँ मुश्ताक भट्ट, टीचर है स्कूल लचमपुरा, राजवार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आज का जो टॉपिक है वो 10वीं जमात के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x or given in below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. Bun kinch graph dit. Sawal chu ak at part she tarik chu graph dit. Kah te polynomial for any polynomial mointo te p of x. The as chu wuchun eman maz number of zeros. Prat case maz wuchun number of zeros ke as tashim pat kum hishmet linears maz de quadratics maz de graph उसका तो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हाउ टू बिगिंस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर ये आज वुचमुत कुन ते साथ ग्राफ ऑफ y एस p of x सो कर कुन ते जाय x एक्सिस पे जो कि ये x एक्सिस ये लाइन ये y एक्सिस अगर y ग्राफ कुन ती जाय कर x एक्सिस पे कट इंटरसेक्ट हम जस इंटरसेक्ट करान सु आसान x कोऑर्डिनेट सु आसान अमुक 0 सपोज यत तु ये ग्राफ वुचन इस पैरेलल ग्राफ लाइनर इशन यत x एक्सिस छिन कुन ती जाय टच करान यानी क्रॉस करान तेल वनो उस युस ये छ हैज नो 0 बट द ग्राफ ऑफ the graph of y is equal to p of x does not intersect intersects x axis at any point therefore the polynomial p of x has no zeros. ठीक पक्ष दोयम पार्ट दोयमस पार्ट्स में वुचु तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये ग्राफ कसन जायन बासन तक कट करन ये ग्राफ वसान x एक्सिस करा एक जाय कट को अच्छा 0 but the graph of is equal to p of x intersects x axis at one and only one point at one and only one point एक सी जाय शादी करन therefore the polynomial p of x has only one zero. ठीक तो त्रेम पार्ट नमोनिश ये x एक्सिस उस कसन जायन छ कट करान ग्राफ आगो यम जसुत ये गो 2 ये गो 3 अश खाली अथ लाइन वुचन ये कसन जायन कट न कि y एक्सिस अश वुचन x कोऑर्डिनेट जो कि x कोऑर्डिनेट छ आसान zeros ऑफ द पॉलिनोमियल तो वुच आख यम जाय कट कर बेश यम जाय कट कर बेश यम जाय गो अथ आसान यथ ग्राफ्स आसान यथ शक्ल आसान अथ आसान 3 zeros गो इस लिखो the graph of is equal to p of x. P of x is kind of polynomial through intersects x axis at 3 different points. 3 at 3 points.
Therefore, the polynomial P of X has three zeros, three real zeros. ठीक, ژوٗرِم چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ گوٚو x axis, یہِ گوٚو y axis. اَکہِ سایڈٕ چھِ چوٗنکہِ چھُ اپوٲرڈ گراف چھِ مگر کٔژن جاین چھِ کران اکھ گوٚو ییٚتٮ۪تھ اکھ گوٚو یہِ گوٚو دۄن جاین چھِ کران x axis کٹ تمیُک مطلب گوٚو اتھ آسان زٕ zeros, زٕ roots. But the graph of y is equal to P of X intersects x axis at 2 points. At 2 points, therefore, the polynomial P of X has two zeros. ठीक, गयो तन चोर पांचम ग्राफ वुचान तो x axis कसन जान छी कट करान ग्राफ अख गो यत गो अख यम जे सिद गो ज यम जे सिद गो 3 यम जे सिद गो 4 गो चोरन जान छी x axis कट करान तम मतलब गो अत आसन 4 zeros. The graph of y is equal to P of X intersects x axis at 4 points. At 4 points, therefore, the polynomial P of X has 4 zeros. Nemon is shame nemon is ekis jay is coincide beyim jay don side don jay kyunki cross ni gasan ki at donway she ekis jay a to a dash emak is point is coincide gasan yani ekis jay shi gasan wo is don jay cut karan ak z tren jay you go ak you go z you go 3 गो 3 जाइन छ x axis पे कट करन तो मतलब गो अथ हेकन ऐसत 3 zeros. वो इसलिए को इन जस्ट शोड the graph of y is equal to P of X intersects x axis at 3 points. X, the graph of y is equal to P of X intersects x axis at 3 points. Therefore, the polynomial P of X has 3 zeros. Has 3 real zeros. I could try to be boards per nazar. Question number 1 was exercise 2.2. Inshallah, impact karo is 2.1. Sorry, impact karo is 2.2. उम्मीद कि तो ऐसी समझ आमत अपना ख्याल रखिएगा मुश्ताक भट.